बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब थोड़ा बहुत कमी भी आपसे मिलके वैसे दूर हो जाती है बेटे। आप आए हुए थे दूर से, सच में मैं बिल्कुल मेरी सर्जरी मैंने कहीं और नहीं करवाई, मैंने यही कहा कि मैं अर्चित बेटे से ही सर्जरी करवाऊंगी और फिर मैं इस हॉस्पिटल में आई। So sweet of you, so sweet. खुश रहो। Hi, how are you? I'm good, how are you? So, आप मिलवाने वाले थे मुझे? So that is our auntie. क्या होता है ना कि कैंसर ट्रीटमेंट में ना ट्रीटमेंट इतना लंबा होता है कि वो पेशेंट से रिलेटिव बन जाते हैं. So she is a torch bearer, she is a cancer survivor, and she is a wonderful lady. She's doing amazing work, you know, and I happened to treat her for 2 surgeries. And she's a cancer surgeries. Two that too. Okay. So एक face की, एक breast की, and she has survived both of them so well. So I think we'll just go forward for this talk show and we'll understand more कैसी journey रही आपकी and what other things to be followed. बिल्कुल बेटे। I think it is also very important to address something for the ladies because you know एक घर में the lady is the fulcrum of the wheel. Right. You know उसको कुछ हो जाता है तो सब कुछ बिखर जाता है. हस्बैंड को सॉक्स नहीं मिलती, बच्चों को टिफिन नहीं मिलता. Yes, I think it is very important job that you are also doing and spreading so much of awareness. Thank you so much. I'm glad to have you people in the community and spreading so much awareness and especially love and the care. Very important है. क्योंकि आंटी को उसमें दिक्कत लगा कि कैंसर लगी नहीं है, आंटी को कैंसर नहीं है. सब यही कहते हैं. देखो कैंसर का ये रूप भी है कि कैसे she smiling glow on the face. हेयर स्टाइल बदल गया, पहले बाल में से लंबे बाल थे. सूट कर रहा है आपको. ज़्यादा अच्छा लग रहा है. बिल्कुल, कई लोगों ने ही कहा कि चलिए आंटी अभी हम मिलते थोड़ी देर में. दैट जो आपको पहले बहुत जानते हैं हम लोग कि कैसे आपकी जर्नी रही. थोड़ा हम व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि कैंसर इज क्यूरेबल एंड डरने के नहीं है. आंटी इज रोल एग्जांपल. आज आप स्पेशली बुलाया है, डॉक्टर ने बुलाया है इनको ताकि हम इनके बारे में जाने कि जर्नी कैसी रही और हमें क्या ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में. Sure. All right, see you. Hello COMI family. Today we are going to talk about a very important topic, that is cancer. कैंसर का नाम सुनते ही हम सभी के मन में एक डर सा लगता है. Many myths associated with it make us believe that cancer is life-threatening. But the fact is, many cancers become life-threatening if not reported on time. Breast cancer is one of the such cancers and is also one of the leading health concerns. So breast cancer is curable. Yes, I would like to start our today's live session with this statement before we get further into discussion with the panelists. So we are here at Sanar International Hospital, which is a multi-speciality hospital. And like every live session with the hospital, we are here again with another specialist who specializes in cancer surgeries. So we are going to meet Dr. Archit Pandit, the director and HOD, Surgical Oncology, Sanar International Hospital. Dr. Archit has been trained at AIIMS and is one of the leading oncologists of the country. In a span of 15 years of his career, he has performed more than 10,000 surgeries till date. And with him, we will also meet Mrs. Kusum Mohindra ji. She's a cancer survivor and she has been operated by Dr. Archit. And we will understand from her how her journey has been, and it will be a motivational. I have met her and she's really a motivational lady. So let's welcome both Dr. Archit and Kusum ma'am. How are you, sir and ma'am? Thank you for having us. Yeah, I'm absolutely fine. We are very lucky that you have given us time and for COMI family and for awareness of breast cancer. So just tell something about yourself first. First, I would just like to say namaskar to the whole COMI family. Ms. Shruti was just telling me about the whole family. I think it's wonderful and the wonderful job that they are doing. I'm Dr. Archit. I'm heading the cancer department and I'm working as a director in surgical oncosciences, that is cancer surgeries, in Sanar International Hospital, Golf Course, Gurgaon. मेरा नाम कुसुम महिंद्रा है और मैं एक कैंसर फाइटर कह लो, सर्वाइवर कह लो, कुछ भी कह सकते हो. सबसे बड़ी बात है कि जब मुझे इस कैंसर का पता चला और फिर सर्जरी भी हो गई तो मुझे लगा कि जो मैं सपने देखा करती थी कि मैंने सोशल लाइफ
सोसाइटी को कैसे वापस करूं, ये मुझे मोटिवेशन कैंसर से ही मिला। जो काम मैंने आज से कई साल पहले करना था, कैंसर ने मुझे बताया कि टाइम आ गया है आपका, मैडम उठो और अपने काम में डट जाओ। So nice of her. So डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी सबसे पहले कि कैंसर हम सब ने सुना है, हम सबको बहुत डर लगता है इस शब्द को जब सुनते हैं हम लोग, बिकॉज क्योर हम काफी लोग हो रहे हैं, बट काफी मतलब डेथ्स भी होती हैं, इसलिए तो मतलब एक फियर आ जाता है मन में कि किसी को भी सुनते हैं आसपास होता है। तो कितनी तरह के कैंसर्स होते हैं, पहला क्वेश्चन मेरा ही रहेगा। दूसरा कि सारे क्योरेबल होते हैं? सो आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज जो मैं सबको देना चाहूंगा वो ये है कि कैंसर क्योरेबल है एंड कैंसर से एज सच डरने की जरूरत नहीं है, बट कैंसर के से जागरूक होने की जरूरत है। वी नीड टू बी अवेयर अगेंस्ट कैंसर, बिकॉज if we detect cancer early, if we detect our symptoms early, only then there's a very very high chance of getting cured. So जैसे इन्होंने पूछा कि कैंसर किस किस तरह के होते हैं, तो कैंसर हर बॉडी पार्ट का कैंसर हो सकता है। कैंसर मुंह का भी हो सकता है, कैंसर ब्रेस्ट का भी हो सकता है, कैंसर लंग्स का भी हो सकता है, कोलॉन, इंटेस्टाइन एंड पैनक्रियाज, लिवर, मतलब हर चीज का एक कैंसर हो सकता है। एंड कैंसर इज नॉट समथिंग विच इज फॉरेन टू आवर बॉडी। ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर से आया है। कैंसर हमारे ही सेल्स म्यूटेट हो जाते हैं, हमारे ही सेल्स खराब हो जाते हैं बिकॉज ऑफ सम रॉन्ग हैबिट्स विद इन अस, और मे बी अनफॉर्चुनेटली व्हेन देयर इज नो रीजन अवेलेबल, और समटाइम्स द जीन्स आल्सो प्ले अ रोल in making these cells. So what are bad. those factors? Can you just elaborate? I think it's very important to know, especially in today's world. Yes. So I think tobacco, I think everyone knows about tobacco, and there is no need to stress that tobacco in any form, be it smoking, be it gutka, whatever form, is bad for health. And tobacco can actually affect any organ of our body, be it head, be it breast, be it lungs, be it abdomen, पेट, कहीं का भी. And secondly, recently World Health Organization has said that the second most important cause of cancer is obesity. So आजकल physical exercise कम हो गई है. Our kids are not playing outdoor as much as we used to do. They are more into video games, they are more into phones and all. So physical exercises have gone down, but I'm happy that nowadays people are also very much cautious about their own body. They are going to gyms. So in future we will definitely see that the cancer rates are going to go down. But what we are seeing today, आज जो हम देख रहे हैं वो आज से 20, 30, 40 साल पहले का है, जो इतनी ज़्यादा awareness नहीं थी regarding your own health. So I think obesity, physical health, physical exercises, these are one of the most important and preventable causes of cancer, and these causes can actually be prevented to the extent that you will be surprised to know, Shruti, that World Health Organization has also said that 40% of cancers are preventable. Means we can actually prevent them from coming. Okay, technology, मतलब this use of more of the gadgets and all that also plays a role. I just this is increased a lot. So for example, if you just control your diet, so if you're not having a lot of preserved diet, so preservative नहीं होने चाहिए, fatty diet नहीं होना चाहिए, anything which causes a lot of obesity, a lot of fat, lot of, so that should be going down. And cancer is detected early, as you rightly said, is because of a lot of gadgets have come into play, that we can actually detect cancer at a very very early stage. So prevention and early detection is the key to cure cancer. So this is related to breast cancer also? Right. So breast cancer के दो aspects हैं, एक है early detection और एक है prevention. Okay. Prevention again, जैसे मैंने बताया कि you should not be having tobacco, take alcohol in small quantities, and physical exercise, prevent obesity, and know about your body. Then this is about prevention. In breast cancer, early detection, how is early detection done? So I would suggest that every woman should examine their own breast. This is called as self-breast examination. Okay. And every day, if you just examine your breast, some or the other day, God forbid, if there's a lump, you will be picking it up very early in your life. And second is, after the age of 40 years, there's a guideline which says that once in a year, we should just get a simple mammography done.
Okay. once in a year. Okay. So a mammography ka cost is hardly 400-500 rupees, and if you just spend 1 rupee a day of your life, you can actually early detect these cancers and be sure of curing them at a very, very early stage. So as specific to breast cancer, yes, mammography and self breast examination is very, very important. I think that's really, really very important piece of information. That's important. कुसुम जी, आपकी जर्नी बहुत चैलेंजिंग रही होगी, आप कैंसर सर्वाइवर हैं, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? मेरे छोटे बेटे की शादी थी, उससे तकरीबन 20-21 दिन पहले मुझे गाड़ी टक्कर मारती हुई चली गई, तो मैं गिर गई, बेहोश हो गई। और उसके बाद मैं घर गई। घर जाकर के शाम को सोने के बाद शाम को मैंने देखा कि मेरे यहाँ लेफ्ट छाती में बहुत दर्द हो रहा था। तो जब मैंने हाथ लगा के देखा तो सख्त, जैसे कोई पत्थर होता है, इस तरह का लग रहा था। तो मेरे हस्बैंड तुरंत मुझे सामने डॉक्टर के पास ले गए। तो उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि ये कैंसर है, उन्होंने कहा नहीं, आप ये वाले टेस्ट करवाइए जाकर के। तो फिर मैं टेस्ट करवाए मैंने, और फिर मैंने कहा कि एक और जगह हम ओपिनियन ले लेते हैं। तो हम हॉस्पिटल में चले गए और वहाँ पर डॉक्टर अर्चित थे। उन्होंने देखा और कहा कि भाई ये लम्प जो है ये निकालना तो पड़ेगा ही, और तुरंत निकालना पड़ेगा। लेकिन मैं इतनी घबराहट में थी, मैं इतनी परेशान थी कि भाई ये कैंसर तो नहीं है कहीं, ये जैसा मुझे पिछले डॉक्टर ने बताया था। तो इन्होंने मुझे बहुत ही काउंसलिंग, ऐसी काउंसलिंग की कि मैं तुरंत तैयार हो गई। और जबकि मैं सोची थी नहीं, अगर कुछ है तो मैं शादी के बाद 20 तारीख के बाद करवाऊंगी। तो मैंने इनसे एक ही बात कही थी कि भाई बेटे की सगाई में मैंने डांस जरूर करना है। तो इन्होंने प्रॉमिस किया था कि उस टाइम तक मैं आपका ये सब कुछ ट्यूब रिमूव कर दूंगा, और वैसा ही हुआ। लेकिन एक जो कैंसर का दिमाग में मन था कि आ जाता है, कैंसर का मतलब मौत, पहले मैं यही सुना करती थी। और मुझे ये पता भी नहीं था कि कैंसर कैसे पता लगता है। उसके बाद मेरी कीमो हुई। कीमो में मैंने बहुत कुछ भुगता, जिसका बयान करना बड़ा मुश्किल है शब्दों में। एक हफ्ता मेरी तबीयत इतनी खराब रहती थी कि मुझे लगता है कि इससे अच्छा बंदा जो है वो मर जाए या कुछ कर ले। जो आपको मतलब मोटिवेट करती थी, क्या चीज थी? लेकिन जैसे इन्होंने मुझे गाइड किया, सबसे ज्यादा मैं कहूँगी। और एक मेरी छोटी सिस्टर ने मेरी बड़ी हेल्प की इसमें निकालने के लिए। एक्चुअली घर तो मेरे साथ नहीं था। तो उन्होंने कहा कि मम्मी, जब आपको खाली टाइम मिलता है, जब आप ठीक होते हो 1 हफ्ते के बाद, तो आप कुछ ऐसा काम करो जो आपने पहले सोच रखा था और अब उसको पूरा करो। तो मैंने फिर बड़ा लिटरेचर पढ़ा 1 हफ्ते के बाद, जो भी टाइम होता था। और मुझे वहाँ से लिखने की प्रेरणा मिली कि मैं स्टोरीज भी लिखती हूँ, अपने एक्सपीरियंस भी लिखती हूँ, और सब लोग बड़े अप्रिशिएट भी करते हैं इस बात को। तो ऐसे फिर टाइम धीरे धीरे निकल गया। मैं आपको बताता हूँ, शी इज वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग फाइटर्स. She has undergone 2 surgeries. अच्छा. Yes, one of the breast and one at the face. अच्छा. And जो face वाला था, that was also pre-cancerous. But again, because she was so much aware, इतनी awareness थी कि कुछ आने से पहले ही she used to get the treatment done. And मैं इनको अब मिसेस कुसुम नहीं बोलता, मैं इनको आंटी बोलता हूँ प्यार से. रिलेशन बन गया, प्यार का रिलेशन बन गया, विश्वास. yes. I think ट्रस्ट आपने जो बोला ना, वो मुझे भी लगता है कि आप जब विश्वास करते हो तो अपने को सौंप देते हो आप, और वो आपके लिए जर्नी थोड़ी इजी हो जाती है. बिल्कुल. That is really, I think, commendable. So I think cancer treatment journey may be tough. Surgery was very easy, I think. है ना, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं, मुश्किल नहीं. बाकी भी treatment are not very difficult, but yes, there is a light at the end of the tunnel. I think that should be seen by all the patients when they go into this journey. Okay, bhai, at the end of the tunnel there is light, and we just have to reach that. And I think doctors like you are those person torch bearers जो होते हैं ना. नहीं बहुत important होता है. I think every doctor is doing good. Everyone is doing good. मतलब experience सबके रहते हैं. डॉक्टर ने बोला कि जब आपसे मिली डर रही थी वो, फिर भी आपके मतलब एक विश्वास दिलाने से, and she could like मैं कर सकती हूँ, वो एक चीज होता है मैं कर सकती हूँ आपके भरोसे. Because हमें as a common man हमें नहीं पता होता, हम तो सौंप देते हैं डॉक्टर्स को, but डॉक्टर्स एक गॉड सेवियर बन के आते हैं. और I think it's a
Thank you. big Thank you. thing कि आप मिल गए उनको and she told बिल्कुल। you. उसके बाद भी आगे जो गाइड करने की बात है, जब इन्होंने अपनी बातें इन्होंने शेयर की कि मैं इस तरह से समाज सेवा कर रहे हैं ये जैसे, उस बात ने ही मुझे एक तरह से मेरे में विश्वास और उत्साह जगा दिया कि मैं भी ये काम करूं। तो मैंने रेडिएशन के बाद मैंने ये सोचा कि मुझे क्यों हुआ ये, जबकि मेरा लाइफस्टाइल ऐसा नहीं था। हाँ, क्योंकि बिल्कुल सिंपल था। टबैको बोला और चीजें बोली तो हाँ जी। व्हाट वाज द रीजन, इनके में रीजन क्या था आपका? So जैसे मैंने बताया कि कई बारी we are just unfortunate to have it. अच्छा। So that was only the reason. There was no specific reason. इनके lifestyle is very clean, very healthy. It's very sattvic, and I think everything was fine. It's just unfortunate. And maybe God has given her the motive to do a lot of other things. That's I think we started a lot of things, right? So, Dr. Sir, I want to ask you that there is so many myths associated with breast cancer, like consumption of soya can lead to cancer, and any lump in breast can be a cancer. As you said, you detect कर सकते हैं हम लोग, but now we can hear consumption of sugar can also cause cancer. So, what is your take on those? These are myths or these are facts? So these are definitely myths, Shruti, and all that I can say is that indirectly sugar may be related to cancer, but how it is related is if you take a lot of sugar, then you again become a lot of obese. So obesity is the core reason of having cancer, especially a lot of cancer like endometrial cancer, pancreatic cancer, stomach cancer, esophagus, breast, so there are a lot of cancers which are related with only obesity. And second thing is soya and all, they are all healthy, they are protein and they are all healthy. The only thing that we should remember is that हमें preserved food नहीं खाना. Right. So even if you are having non-vegetarian, ideally we should, I generally prefer a very sattvic food, but if anyone is having non-vegetarian also, try not to have something with preservative and chemicals added. Chemicals, preservative. Fresh लिया और fresh अब restaurants में 10 मिनट में आप ऑर्डर करते हैं, 15 मिनट में खाना आ जाता है, वो कैसे आता है? Ready है, क्योंकि वो रेडीमेड है ऑलरेडी, उसको प्रिजर्व किया गया है. So that is something very important that we need to understand. That's nice. So adding to the same question, I want to ask, social taboos also play a key role in late diagnosis. So you answered already, but if you can more highlight on this, have you experienced any such cases, late cases? So you're absolutely right. Social taboo is a very very big thing. कि लोग आजकल कैंसर के बारे में अगर आपके नेबर को है शायद आपको नहीं पता होगा. Because they don't like talking about it. But now the practice is changing also. People like her, they are the torch bearers, I would say. She is now running a campaign कि वो अपने community में, colonies में, आसपास के neighborhood में, they are doing detection programs, breast cancer detection programs. So people are also outspoken. And because of this taboo कि कैंसर के बारे में बात मत करो, कैंसर किसी को बताओ नहीं, अपनी प्रॉब्लम किसी को शेयर मत करो, इस वजह से आपको सही सलाह भी नहीं मिल पाती है and वही चीज पनपती रहती है और आगे बढ़ती रहती है. But that is where you also come into play. Yes. आपका जो इतना बड़ा ग्रुप है, that is where people get to know each other and they get so much of help. You won't believe, it was maybe around 7 years back. In Noida, I got an opportunity to, in one of the hospitals, I was given the opportunity to speak on cancer, breast cancer. And Kiran Bedi ji was also there. There were 2,000 people there. And we enacted on the cancer. There was a healthy lady and early detection was the point which was featured. And I think Kiran Bedi ji's sister also is faced with the same situation. Okay. So, my objective has always been to spread awareness on cancer, because early detection is one thing that we all should tell others, because as social taboo, we hide. We like, okay, it will be, taken care of. We don't get diagnosed. We say that we are living a healthy life and we don't, go for tests. As you said, every alternate year, every year we should go for tests. Right. So we have to keep people updating about this. So that social message that we gave through a Nukkad Natak to 2,000 people, that's so they all were, had that message clear. Because that is very important to tell others that
this is something that you should take care about it. So I think early detection is one thing that in cancer one can prevent going in further problems, and but I think chemo has to be done if early detection is there. So किसी भी cancer treatment, for example breast cancer treatment के three important core associations हैं. That is, one is surgery, chemo and radiation. So there's a very nice algorithm जो मैं आपको बताता हूँ. It's very nice. अगर आपका स्टेज कम है तो कॉस्ट भी कम है. Okay. अगर स्टेज अर्ली डिटेक्ट है तो कॉस्ट कम है एंड क्योर ज्यादा है. एंड अगर आपका स्टेज लेट डिटेक्ट हुआ है तो कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है एंड ट्रीटमेंट्स भी बहुत सारे इन्वॉल्व होते हैं. रिस्क फैक्टर भी बढ़ जाता है. रिस्क फैक्टर भी बढ़ जाता है वापस आने का. सो जो अर्ली स्टेज कैंसर्स हैं उनका सर्जरी एंड मे बी कीमो, मे बी हार्मोनल थेरेपी से हो जाता है. एंड अगर एडवांस स्टेजेस हैं तो उसमें यूजुअली ऑल द थ्री, कीमो, रेडिएशन एंड सर्जरी, ऑल द थ्री कम इनटू प्ले. एंड उसमें भी सर्जरी इज आल्सो टू टाइप्स एंड a lot of things to discuss about breast cancer. Right. Okay, so I just want to ask the next thing, that does every breast cancer require surgical intervention and breast removal? So any patient who has to be cured should undergo surgery. Surgery से कोई डरने की चीज नहीं है. Just a very simple 1 day 2 day procedure. Okay. And surgery में जरूरी नहीं है कि पूरी breast हमेशा निकाली जाए. We can save the breast also. So उसको हम कहते हैं breast conservation surgery. And दो टाइप की सर्जरीज होती हैं ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में. एक जिसमें पूरा ब्रेस्ट रिमूव होता है और एक जिसमें ब्रेस्ट सेव किया जाता है. एंड डिपेंडिंग ऑन द रिपोर्ट्स देन वी डिसाइड फर्दर कि कीमोथेरेपी देनी है या नहीं. कुछ पेशेंट्स में कीमो पहले भी देनी पड़ती है. So that's a very big and technical discussion which I don't think is required for today's forum. Yeah, but anybody require further they can consult Dr. Archit in Saran Hospital. और कुसुम जी कुछ viewers के लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूंगी कि कैंसर के बाद भी जिंदगी है. क्योंकि अगर मैं खुद देखूं, अपने आप को देखूं, तो मैंने रेडिएशन के बाद ये देखने के लिए कि मुझे ऐसा क्यों हुआ, मैं एस्ट्रोलॉजी में चली गई और मैंने 1 साल उसमें एस्ट्रोलॉजी सीख करके आचार्य की डिग्री भी ली. लेकिन मुझे कुछ खास बेनिफिशियल नहीं लगा वो. फिर मेरा मन था कि एक स्लम में बच्चों को पढ़ाऊं जा करके, और वो स्लम मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढा और 2 बच्चों से स्टार्ट करके 17 बच्चे मेरे पास हो गए पढ़ाने के लिए. उनकी बुक्स वगैरह, कॉपीज वगैरह सब मैंने अपने ऊपर ही जिम्मा ले लिया कि मैं नहीं दूंगा, इनको एक साक्षर तो बनाना ही है कम से कम. उसके बाद भी फिर मुझे जब ये कोरोना के टाइम में भी मैंने ढेर सारे मार्क्स बनाए कि मैं किस तरह से करूं. और फिर मैं अपने जो हमारे चौकीदार है, गार्ड है, उनको मैं वो दे के आती थी 1 हफ्ते में 10 हाथ से बना करके, कि जो ये हमारी मेड्स आती हैं या जो कार क्लीन करने वाले लोग हैं या कोई भी जिनके पास मास्क नहीं है, मैं उनको वो मास्क दे सकूं. तो मैंने इस तरह से ये भी काम शुरू किया. इसके बाद मैंने काउंसलिंग भी शुरू कर दी थी कि जो लोग इससे कैंसर से घबराते थे, क्योंकि कीमो के दौरान जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत कष्ट होता है, तो उस टाइम जो इंसान वो झटपटाता है, अपने बातें किसी से शेयर भी नहीं कर सकता कि उसको क्या फील हो रहा है. तो जिसका मुझे पता चलता था, मैं उनके घर भी मैंने जाना शुरू कर दिया और सारा माहौल देखकर, सिचुएशन देख करके उनको मैंने समझाया कि देखो मैं आपके सामने खड़ी हूँ, मुझे 3 साल हो गए हैं कैंसर के बाद, और देखो मैं कितना काम कर रही हूँ, तो आप भी ठीक हो जाओगे और आपने मेरी हेल्प भी करनी है. कितने साल हो गए आपको? मुझे 8 साल हो गए हैं. 8 साल हो गए. हाँ जी. तो इसमें मुझे लगा कि एक और बात बड़ी इम्पोर्टेंट है कि मैंने वर्कशॉप भी लगवाई हैं, और अभी भी मैंने कोई 5-6 महीने पहले भी वर्कशॉप लगवाई थी फॉर लेडीज कैंसर अवेयरनेस. तो उसमें मतलब मुझे इतना अच्छा लगा. एक हमारा योगा ग्रुप भी है, तो उसमें से 2-3 लोग जैसे हॉस्पिटल पहुंच गए, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि उनकी गांठें जो बन गई हैं, एक की ब्रेस्ट पे गांठ थी और एक की जो थी गले के पास थी गांठ, कि मैं जाकर के अपना चेकअप करवाऊं. तो वहां पर गई हैं और इतनी खुश आई है कि डॉक्टर ने कहा कि ये तो मॉस्किटो बाइट है, कुछ भी नहीं है ये तो.
तो एटलीस्ट एक अवेयरनेस गई और आप एक को बताते वो एक 10 को और बताएंगे तो आई थिंक इट्स बिल्कुल 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 से। तो इस तरह से भी वो नहीं, तो ऐसे में कई बार मैंने क्या देखा है कि लोग ना तो किसी को बताते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि इसको छुपाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, ना वो किसी से शेयर करते हैं अपनी बातें, अपनी फीलिंग्स। लेकिन जब मैंने अपने आप को वहां पे बता दिया कि मैं भी एक सर्वाइवल, हाँ, तो जो लोगों में एक तरह से हो गया कि ठीक है, अभी हम अगर कुछ उनको कहीं डाउट भी लगता है तो वो जाकर के हॉस्पिटल जाकर के चेकअप करवा थैंक यू सो मच कुसुम मैम, सो मच फॉर इंस्पायरिंग, एंड आप इतना कुछ कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है मतलब आपके बारे में जानना। आप कुछ व्यूअर्स को कहना चाहेंगे डॉक्टर जी? मैं एक चीज तो ये बोलना चाहूंगा that the reason that she is now doing so many things after going through cancer is because she has started valuing her own body. She has started valuing her own life, and that is why she knows उनको मालूम है कि value of life क्या है. So what I am coming to is that be aware of what you are eating, eat healthy diet, stop tobacco, alcohol in moderate quantities, in less quantities, and understand your body, what it needs. Physical exercise is what it needs, meditation is what it needs, yoga is what it needs, and these are the things. Staying away from bad foods, adopting good healthy practices is all that you can do for your body, and stay away from all these diseases at length. That is it. Thank you so much for all the valuable inputs, and I hope this will work as catalyst which will make a lot of people aware about breast cancer, and obviously they will not scare. At this first stage is like you don't get scared and go for a test. So these kind of motivational awareness tips is very, very important. So viewers, as a specialist and breast cancer survivor said, breast cancer is curable if treated on time. Our doctors are ready with latest technologies and advanced treatments. We just have to report as early as possible. So early detection is really important, and doctor said that you will have to face less suffering and less cost is involved. And never ignore any mild symptom and consult your doctor immediately. So let's meet in the next every live session soon with Sanan Hospital with the next awareness session next month. Thank you so much. Thank you.